इंट्रो में कही हैं, इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कितनी हकीकत है या फिर ये बातें ऐसे ही हैं जो अहदाफ रखे गए हैं वो हासिल हो जाएंगे? सरिश, बजट तो जैसा तैसा है, हमेशा से ही बजट गवर्नमेंट हमेशा कहती है अवाम दोस्त है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के मुताबिक है, बट मेरे ख्याल में कहीं पे इन्होंने आईएमएफ को खुश किया है, कहीं पे इन्होंने पब्लिक में थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसको उन्होंने बेसिकली पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करने का कहा है। एक दो जो एलिमेंट हैं इसमें जो अनाउंस हुए हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, अब ओवरसीज पाकिस्तानी से कल रात को मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि जो बैंक रेट है और जो मार्केट रेट है उसमें 20 से 25 रुपए का गैप है। वो कहते हैं जो हम पैसे भेजेंगे बैंकिंग चैनल से वो तो पहले ही 25 रुपए कम हो चुके होंगे, तो अगर आप हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज कर रहे हैं तो जो पैसे सेविंग बचाना चाह रहे हैं वो तो उल्टा हमें लॉस होगा। दूसरी बात यह है कि ये जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद जब इसने पास होने के दरमियान में ये जो 12-15 दिन होते हैं, इसके अंदर भी चेंजेस काफ़ी होती हैं, उस पर भी लोगों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये उसकी हर सेक्शन की कुछ सब सेक्शन ऐड करते जाते हैं। मेरी गुजारिश है इसहाक डार साहब से कि काइंडली ये जो आपने ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है, यही गलती पिछली गवर्नमेंट ने भी की थी कि आप माइनस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं चला सकेंगे। आप रियल एस्टेट सेक्टर पे जो आपको तजावीज़ आई हैं काइंडली उनको अंडर कंसिडरेशन लें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से आपको फॉरेन रेमिटेंसेस आएँ। और दूसरी बात ये, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में 12 से 15 बिलियन डॉलर इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्डिंग्स में लॉकर्स में घरों में पड़ा हुआ है। आपने इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम ने उसको एड्रेस नहीं किया। आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए जिससे आपकी वो जो घरों में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा बाहर निकले और स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए, ताकि गवर्नमेंट भी रखी है एहसन साहब के कुछ मखसूस मुद्दत के लिए आप डॉलर्स अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद आपको उन्हें चेंज करवाना है? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आई है। नहीं, वो अगर कोई इन्होंने ऐसा बात अनाउंस की है तो मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूं जो घरों में पड़े हुए हैं, जो लॉकर्स में पड़े हुए हैं, जो तिजोरियों में पड़े हुए हैं। आप उस पैसे को बाहर निकलवाएं और वो आप अपनी सॉफ्ट एंड पॉलिसी से बाहर निकलवा सकते हैं और उसमें लोगों को अट्रैक्शन दें कि लोग स्टॉक मार्केट में चले जाएं या रियल एस्टेट सेक्टर में चले जाएं, जिसको जो फिजिबिलिटी बेहतर लगती है उससे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इंसेंटिव रखना चाहिए था या फिर इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता कि ये भी महसूस करते कि हमें इस पैसे को बाहर निकालना है। मैं अब आपकी तरफ आऊँगी काशिफ अनवर साहब, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, जावेद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के, उनसे भी मैं बात करूँगी। लेकिन काशिफ साहब पहले आपकी तरफ आती हूँ। आपने जो कल बजट आया और आज जो डार साहब ने सवालात के जवाब दिए हैं, आपने किस तरह देखा है इस बजट को? आपके ख्याल में ये अवाम दोस्त बजट है या फिर जस्ट ये घोषणा ही है, अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? बात ये नहीं है, हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जिस तरह से हमारा इन्फ्लेशन रेट है और हमारा इंटरेस्ट रेट है, हमारी डिवेल्युएशन हो रही है, हम पे डेट्स का जो बोझ चढ़ा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए और आईएमएफ के साथ हमारा 9th रिव्यू भी नहीं हो रहा, हमें फ्रेंडली कंट्रीज से कोई असिस्टेंस भी आने की कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही बहुत ज्यादा। तो जो बजट दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने की कोशिश की है, उस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एनकरेज करने की कोशिश की है, टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है जो बंद होने की तरफ जा रही है। क्योंकि एसएमई सेक्टर, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो पहले उसको जो टैक्स की मिलती थी फैसिलिटीज वो 25 करोड़ तक मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 80 करोड़ तक कर दिया गया है। और वहां पर उन स्कीम्स में फिक्स्ड की भी स्कीम है और नॉर्मल टैक्स रेट की भी है, वहां पर ऑडिट से रियायत की भी स्कीम है। तो मेरा ख्याल है
अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात, हमने अपने जो हमारे पाकिस्तानी फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अपने मुल्क को 20-25 रुपए के लिए मुश्किल में ना डालें। अभी तो हमारा जो रुपी है वो पहले ही इतना डिवैल्यू हो गया है। अगर हम पहले अगर हम इसको 285 पे भी लेते हैं, तो अगर हम इसको 1.25 से भी ऊपर लाएं तो 100 रुपया तो ये पहले ही डिवैल्यू हो गया है। तो खुदारा अपनी पेमेंट्स को बाहर के मुल्कों में मत रोकें, अपनी पेमेंट्स को यहाँ पर भेजें, क्योंकि हम आपकी पेमेंट्स की वजह से ही अपने बहुत से जो डेट्स हैं उनको पूरा करते हैं। हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है, आपने फॉरेन रेमिटेंस की बात की तो डायमंड कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी साथ में उसके दिए गए हैं कि भाई आपको, देखिए उसमें इशू क्या आ रहा है। हाँ। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हमारे बैंक के रेट का और ओपन मार्केट के रेट का फर्क आ रहा है। तो जिस तरह से अभी हम भी मिनिस्टर साहब से यही कह रहे थे कि जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है उसको बाहर लाया जाए किसी तरीके से, लेकिन शायद कोई ऐसी एमनेस्टी या ऐसी डिक्लेरेशन IMF की मौजूदगी में नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर स्टेट ये चाहती है कि वो पैसा बाहर आए, तो स्टेट को फिर ये चाहिए कि एक डेट दे दे कि फलां डेट के बाद जितने डॉलर्स हैं फिर वो इन कैश नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डॉलर्स सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, मेरा ख्याल है। तो ये आप सही कह रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर ही ये हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ जिस पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और तनकीद भी की जा रही है, वो है जनाब तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इतनी बड़ी रकम जो ये रखी गई है, इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बजट जो भी है ये तो इलेक्शन बजट है, इसमें तो किसी को कोई रिलीफ या आवाम को, ताजिर बरादरी को किसी भी कोई इन लोगों ने नहीं दिया है, और ये सारा आदादो शुमार की हेर फेर है। बाकी तो इस बजट में कोई ऐसी चीज हमें तो नजर नहीं आ रही तो किसी को मतलब कोई रिलीफ मिले या हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। ये तो इनका आखिरी बजट है और इन्होंने वही इलेक्शन जो बजट है वो पेश किया है। अब बात यह है कि जो हमारी महसूलात हैं वो पहले 7,000 अरब थी, अब इन्होंने 9,200 अरब कर दी गई हैं। वो 7,000 का हमारा 7,000 थोड़ा सा मैं आपको बड़ी माजरत है कुरैशी साहब रोकूं, पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, हम वहीं चलेंगे बराह रास्त। जी साहब, इन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं कवर कैंडिडेट के तौर पर, और डिप्टी मेयर के लिए भी जहां सलमान मुराद ने नॉमिनेशन पेपर भरा है उसके कवरिंग में इरशाद शर डिप्टी मेयर के लिए कवर कैंडिडेट है। यह स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का जैसे एतमाद रहा है, आम लोगों का जो उन्होंने वोट देकर हमें कामयाब किया, हमें एतमाद है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमारी हुज्जत है कि हमें इस मरहले में भी वो हमें सुरखरू करेंगे और अल्लाह करेगा कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान का कि उन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नॉमिनेट किया। और इंशाअल्लाह जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिदमत का एजेंडा है, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा है, उसको मैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, निसार साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, जितने भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो कराची के अंदर उसका हकीकी राइट है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह एक एक कराची वाले को इंशाअल्लाह देगी। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, कराची वालों का, कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों का इंतखाब किया। और इंशाअल्लाह जो कॉन्फिडेंस कराची वालों ने मेरी जमात के ऊपर दिखाया है, बिलावल साहब के ऊपर दिखाया है, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर दिखाया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उस कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरा उतरेगा। जिए भुट्टो। निसार साहब, ये कि आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि अगर आपका मेयर और डिप्टी मेयर आ गया
तो कौन से आप तीर मार लेंगे? हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे, उसको कोई तीर कहे कोई कुछ कहे, हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। जिनके मुंह में जो आता है वो बोल सकते हैं। साहब ये बताइएगा, हाफिज नईम साहब ने आप पर और इदारों पर ये इल्जामात लगाए हैं, हसास इदारों पर, रेंजर्स पर और पुलिस पर, कि पीपल्स पार्टी की ये तमाम तर जो हसास इदारे हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है और उनके लिए वो तमाम तर चेयरमैन को उठाकर अगवा कर रही है। क्या समझते हैं कि कितनी इसमें जो है वो शफाफियत है इसमें? अगवा का इल्जाम तो सबूत के बगैर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अगर उनको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि शायद उनकी हार होगी, तो उन्होंने तो ऐसी बातें कहनी है कि जी अगवा हुए, ये हुए। अगर वो नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगवा का सबूत तो मुझे नहीं मालूम। सुना है कि काफी सारे जमा इस्लामी के लोग भी घूमे। क्या मतलब? मैं एक इस पे इजाफा कर दूं, देखें इसमें ये कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि हम कराची के मसाइल को हल करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह मेयर पीपल्स पार्टी का ही आएगा जो कि इन तमाम मसाइल को हल करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं निसार खोड़ो यहाँ पर मौजूद हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, सईद गनी हैं, जो कि मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। पहले से कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों ने अपनी जमात को, अपनी क़यादत को पहले से बता दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई का एक ग्रुप बना हुआ है अपना मेंबर्स का, जो केएमसी के मेंबर्स हैं। जरा कोई अगर दोस्त है तो पूछें कि उस ग्रुप के अंदर उनके मेंबर्स क्या बातें कर रहे हैं जमात इस्लामी के मुतालिक। अब अगर कोई आदमी जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहता और हाफिज साहब खड़े होकर कह देंगे अगवा हो गया, तो उसका इलाज हमारे पास कोई नहीं है। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream and Sheikh Steel. Tested है। आप कैसे करेंगे यकीनी जिस तरीके से आज मेयर का इलेक्शन है, नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आए हैं, लेकिन 3 हुकूमत रिप्रेजेंट कर रही है आज मेयर के बात करने की बजाय, तो आप समझते हैं कि वो खुद मुख्तार मेयर होगा? साईं बेटा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सूबाई ओहदेदार भी है और कैंडिडेट भी है, वो हमारे सामने नहीं बोले। और दूसरी जानिब अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। Operation in both security and defense. As you know, both Pakistan and Iraq have faced the menace of terrorism, and we've each learned lessons from that. So I think there's a lot for us to cooperate and share on that topic. You mentioned cultural and religious ties. Absolutely. I'm working on enhancing our cultural and religious ties, working on easing visa for religious tourism here in Iraq. And as you mentioned, I'm doing a groundbreaking for our embassy here in Baghdad, and we will be opening a consulate in Najaf soon as well. But we also have scope for economic cooperation between Iraq and Pakistan. I hosted the first business forum between the Pakistani business community and the Iraqi business community. There's immense potential for investment on both sides, and the Iraqi government is also working on diversifying their economy, and they have a an initiative with a great deal of potential where they're constructing a development corridor. And I've spoken to my Iraqi counterparts and the Prime Minister of Iraq and requested them that Pakistan should also be included in this development corridor. So I believe there's a lot of scope for economic cooperation, security cooperation, and cultural and religious engagement. Let's talk about one of the biggest challenges that faces Pakistan, and that's climate change, particularly for you as a foreign minister as well. The Pakistan economy is still recovering from last year's devastating floods. Now, they did highlight the international community's responsibility toward helping Pakistan. There were a lot of promises made, including the United Nations-led post-disaster needs assessment, which said that Pakistan needed $16.3 billion in
aid. Has any of that aid, have you got even close to any of that being delivered to Pakistan? So thank you very much, and I think you've touched on an extremely important issue, not just for Pakistan, but the world at large. A year ago, Pakistan suffered the most devastating climate catastrophe that we've ever seen in our country's history. With a third of our landmass underwater, 1 in 7 Pakistanis affected. That's 33 million people, and obviously that has had an outsized effect on our economy. As far as our reconstruction plans are concerned, we don't only want to build back, but we want to build back better in a more climate resilient fashion. And to that end, Pakistan co-hosted with the UN Secretary General a climate resilient Pakistan conference in Geneva in order to raise the necessary funds. We had set our target at half of what was required by the damage needs assessment. So our target was about $8 billion, and we sort of overperformed. We touched between $9 and $10 billion as far as pledges are concerned. We are working to materialize those pledges while at the same time engaging with the IMF to finalize our IMF program. And of course, once our IMF program is in place, I imagine we'll receive even more of the resources from those resources pledged by countries or multilateral institutions at our conference for a climate resilient Pakistan. But pledges need to become actual cash given to the country, and there is a lot of donor fatigue when it comes to Pakistan. Funds have been mismanaged in the past. I mean, you must be coming up against that as foreign minister. A lot of international community members saying to you... Allow me to just correct you right there. Actually, no, I'm not. I'm not. There's quite a lot of misinformation about funds being mismanaged in the past. In fact, every single accusation about funds mismanagement as far as disaster management is concerned, be it the 2005 earthquake, be it the 2010-11 floods, or now indeed these floods, while there has been frivolous accusations, no accusation has been proven truthful. And I think that's why, I mean, sort of the biggest proof that this accusation doesn't hold any weight is the fact that Pakistan, despite the odds, despite the fact that the world is completely focused on the Ukraine-Russian conflict, and most of not only humanitarian budgets, but a lot of European and Western countries' budgets are going towards that conflict. Despite all these challenges, Pakistan received support from everywhere, from the West all the way to the East, you're right, as far as pledges are concerned, because this was a development conference. So while a couple of $100 million were in the form of grants, the large chunk of the financing we've managed to arrange are either through bilateral loans or through multilateral institutions such as the World Bank, the Asian Development Bank, and such. So the arrangements we've made with international financial institutions, we've already started working on much of those, for example, in my home province in Sindh. But it will take time for us to materialize the full amount. Let's look to the region now and begin with Afghanistan. The Taliban has returned to power in Afghanistan in 2021. Pakistan's position was, let's give them a chance. Pakistan can't completely afford to disengage from Kabul. But has the Taliban failed Pakistan's hope and expectations? Look, I think that it has been slightly over a year since the fall of Kabul. And of course, there were many expectations from the new regime. And they're still, while they have delivered in some areas, there's a long way to go in many other areas. As far as Pakistan's position on Afghanistan, I think you'll find Pakistan's position is in line with the position of the international community. We also request that the interim government in Afghanistan fulfill their pledges to the international community and to their own people, be it to do with women's rights or women's education, or their commitment for their soil not to be used by a terrorist or to conduct terrorist activity in other countries. But we still believe that engagement is the solution, and not only Pakistan but the entire international community must engage with Afghanistan, because it is in
all our interests that Afghanistan becomes a secure, prosperous country, sort of at one with itself and with its neighbors. And in order to do that, it requires not just Pakistan, but the entire international community to engage with Afghanistan. And then, of course, it is also incumbent on the interim government in Afghanistan that they live up to their commitments to the international community. But there's also domestic issues here as well. The Pakistani Taliban remain a threat. There was a very recent incident in northwestern Pakistan that left 2 soldiers and 2 militants dead. I mean, this must have an impact on the relationship with the Afghan Taliban. You're absolutely correct to point that out, and the biggest bone of contention we have is the security threat that we face, particularly from the Tehrik-e-Taliban Pakistan. We've seen a quantitative increase in the number of terrorist attacks in Pakistan following the fall of Kabul, and we are engaged with the Afghan authorities with sort of a very strong request for them to take serious action against such groups. I hosted the Afghan foreign minister in Pakistan. We also had a trilateral meeting along with the China, Pakistan, and Afghanistan, and the messaging out of our engagements there did include specifically action against terrorist groups. What does your relationship look like with Tehran at the moment? Should we expect a visit like the one you've just made to Baghdad? I've already been to Tehran. I think it's been almost a year now since my maiden visit, and then recently, just last month, I accompanied the Prime Minister to inaugurate 2 projects at the border between Pakistan and Iran. One was a border market to encourage cross-border trade between Iran and Pakistan. We inaugurated a border market, and we also inaugurated a transition line where we're procuring electricity from Iran for Gwadar in Balochistan. So we're indeed engaged with Iran just as much as we're engaged with Iraq. Did the subject of Iran come up during your talks with your Iraqi counterparts? Iran clearly has a very good relationship, but controversial, with Iraq. I think that particularly recently, given the positive relationship, positive development between the relationship of Saudi Arabia and Iran, and the engagement that was coordinated with China, and Iraq played a large role in that, which has resulted in both countries re-establishing diplomatic relations and reopening their embassy. That is that was very positive news, not only for Iran and Saudi Arabia, but our region and the world at large. And we're all optimistic that hopefully through engagement we will be able to resolve all issues, and we will see an increase of the peace dividend within the region. Now, let's talk about the region slightly wider. China has always been a very key ally of Pakistan, but it has been accused of almost loan shark tactics when it comes to developing infrastructure within Pakistan, that the money that China is giving to Pakistan is coming at quite a high cost. Is that an assessment that you would agree with, or do you think China is still a fair weather partner? No, I most certainly don't agree with that assessment, and I think that unfortunately those with a biased attitude consistently repeat this claim without any proof. We have engaged with China over the years. We have an all-weather strategic partnership with China, and we have through the One Belt, One Road initiative and the China-Pakistan Economic Corridor, Pakistan has developed its energy infrastructure, its communication infrastructure, its ports infrastructure. Given the amount of work we have done, obviously that amount of development always comes with a cost, but we are optimistic that we will be able to live up to all our commitments, and development is the right of all countries, not just a few countries, and it is the responsibility of the governments in Pakistan to develop
their infrastructure and to encourage economic prosperity for their people. As a result of the China-Pakistan economic corridor, we are optimistic that there will be an increase in economic activity not only in Pakistan but also in China, and we can complement each other's economies. Now, Imran Khan was wanting closer relations with China. He wanted closer relations with Russia. That was seen as very controversial. It's one of the things that led to his downfall. Where is Russia's relationship with Pakistan right now? Do you have a relationship? So as far as Mr. Khan is concerned, I do not share your assessment whether vis-a-vis his approach to China or to Russia. But as far as this government is concerned, we are committed to maintaining relations with all countries, engaging with all countries, and we've seen an enhanced engagement with the Russian Federation since the new unity government has come into power, and we want to develop deep, meaningful relations with economic ties need to be enhanced, a whole host of ties need to be enhanced with Russia, but at the same time we maintain our neutrality and don't want to get drawn into the conflict between Russia and Ukraine. As far as China is concerned, I already sort of touched on that briefly. We have always, and we will seek to continue to enhance our cooperation with China. If Imran Khan, while in power, also worked with the Chinese government, that is a continuation and not an anomaly as far as Pakistan's foreign policy is concerned. The only person to blame for Mr. Khan's downfall is himself, and I'm sure that history will prove that to be the case. But among the supporters of Imran Khan, they squarely believe that the army was the one that brought him down. Amongst the supporters of Imran Khan, support for the army is at an all-time low. Many commentators in Pakistan are suggesting that whilst it has been acknowledged by retired army officers that there is a lack of support now for the army, as an institution, the army is still very strong. Do you agree with that? Do you agree that the army is unpopular in Pakistan? I really appreciate that you've given me the opportunity actually to address this question, because while Mr. Khan's supporters might hold this view, it is not based in reality or fact. As far as the role of the army in Pakistan's politics, well, of course, no one can hide the fact that we have been, sort of more than half of our history, been governed by military rule. And I stand before you today, my party, the Pakistan People's Party, has challenged each and every single dictatorship in Pakistan's history. From the last dictatorship we had was Mr. Musharraf's dictatorship, and Mr. Khan's political history is this, that he has supported every dictator and he supported every autocrat in Pakistan's history. Even Mr. Khan's rise to power in 2018, it's a well-documented fact, a proven and established fact, that he was brought into power through a rigged election in collaboration with some former officers of the Pakistan army. Mr. Khan's problem with the Pakistan's army began in April of last year, when they declared that they would not be involved in politics and they would not take sides. Mr. Khan's issue with the army in Pakistan is not that they're not involved in politics. His problem with the Pakistani army is they're not getting involved to support him. As far as the army's popularity as an institution is concerned, the PTI supporters may be upset with the Pakistan army for not violating the constitution and supporting Mr. Khan, but the majority of Pakistani citizens want the Pakistan army to remain apolitical and not intervene in the politics of the country, and a majority of the people of Pakistan are deeply offended by the actions that took place on May 9th, where Mr. Khan encouraged his supporters to attack
army installations in Pakistan, the Corps Commander House in Lahore, the General Headquarters in Rawalpindi, and many military installations. Such an attack has never taken place by any political party in the history of Pakistan. And now, those who were involved in these attacks on our military installations must face the consequences of the law of the land. But you must agree, and you've almost said it yourself, the Pakistani army does have an outsized influence in Pakistan. That cannot continue the way it is, surely. You've got, a change has to come. Absolutely. But we are the ones who have, not from today, but for generations been struggling for that change. We don't believe that that change comes overnight. And we don't believe that change can come by attacking military institutions in the country. The only way that change can come would be for democratic forces and civilian institutions such as Parliament to take their place within Pakistani society and exert themselves. Of course, while Mr. Khan was Prime Minister, he paid very little attention to Parliament, and when he should have been leader of opposition, he left Parliament. The fate of Pakistan can't be decided on the streets of Pakistan. It has to be decided by Parliament, and that is the only way that Pakistani democracy can be strengthened. When civilians take their own space, we'll ease the army out of politics. Now, you've been in the job for just over 14 months as Foreign Minister. Indeed, you're the youngest Foreign Minister in the country's history, but you've been in the rough and tumble of Pakistani politics since your mother, Benazir Bhutto, was assassinated in 2007. How would you sum up your experience? I would sum up my experience as that of Pakistan's experience over this time, that it's been complicated. As far as our development as a democracy, it has very much been 2 steps forward, 1 step back. 1 step forward, 2 steps back. We saw a lot of progress on that front between 2008 to 2013, and we've seen the health of our democracy deteriorate post-2008. Now there's a lot of work that needs to be done to strengthen our democracy. We've seen that the political stability that was a dividend of that democracy, it was a dividend of the Charter of Democracy that was signed by my mother, lasted for 10 years, and that political stability from 2008 till 2018 resulted in economic development and economic stability. And as soon as we saw political stability, we've seen challenges for our economy. So I believe that Pakistan has many challenges, sort of a perfect storm. We've got the climate crisis that you mentioned, we've got the fall of Kabul, we've got the implications of the Ukraine-Russian conflict, and we will have our own domestic issues. But all of these challenges can be overcome. These are difficult challenges, but they are temporary challenges, and I am confident that the people of Pakistan will come together to rise to meet these challenges and build a better future for ourselves. Now, on her return to Pakistan, I did ask your mother, Benazir Bhutto, why she would return. I said, it often ends badly for your family. Why risk your life? Why return? Let me ask you the same question in a slightly different way. Your grandfather was executed, your mother assassinated, your uncle was killed. Do you regret returning to Pakistan? Oh, most certainly I don't regret returning to Pakistan. The thing that drives me every day is the desire to fulfill my mother's vision for our country. And in my 14 months as Foreign Minister, I've seen the potential that we have, and we only need an opportunity to unlock that potential. And then the sky's the limit for Pakistan. We are a country that has been ravaged by the consequences of the Afghan war and our own internal decisions, but I have full faith in our country and in our system. As far as my family's history, you're absolutely right. It's one that's almost out of a Greek tragedy, but actually I'm here in Baghdad, and I'm on my way today. I'm going to be going to Karbala, and I often think that if the Prophet's family suffered such difficulties in their lifetime, then our sacrifices or our difficulties are nothing in comparison. And with struggling, and only through struggling, and only through facing the odds do you get to receive the fruits of your labor. And I'm sure one of the fruits of our sacrifice, one of the fruits of this labor, will be a more democratic, peaceful, prosperous, and ultimately progressive Pakistan.
Sounds remarkably like your mother's words, democracy is the best revenge. Is democracy actually in Pakistan, though? I think that Pakistan is transitioning towards, well, it has a potential to transition towards democracy. We are standing at the fork in the road. And I think that the populist post-fact politics that Mr. Khan has introduced to Pakistani society is really shaking our young democracy to its foundations. We've seen how a 200-year-old democracy like the United States has been shaken by populism over there. And this has been a fundamental challenge to us. All the norms, democratic norms that we had established post-2008 in order to become a semi-functioning democracy are now being challenged, but it is now up to us to ensure that we implement the Constitution, the law, and do whatever we can to combat these challenges so that it is the interest in strengthening democracy rather than undermining it. But I would absolutely admit we are at that fork roads, and now it depends on the decisions that the people of Pakistan take. Pakistani Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, thank you for talking to Al Jazeera. Thank you for having me. जिंदगी एक टेस्ट है, तो जो सरिया जिंदगी भर के लिए लगाया जा रहा हो वो क्यों ना टेस्टेड हो। शेखू स्टील टेस्टेड है। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। प्रीमियम चॉकलेट चीज स्प्रेड, मिल्क, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज फ्लेवर्स में। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। ओमेगा विस्टा झांक। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें या तशरीफ लाएं। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। ओमेगा विस्टा झांक। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें या तशरीफ लाएं। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। मामा कहती है इस चॉकलेट में चीज है, दूध की ताकत है। मजे की कितनी है यार। स्विस प्रीमियम चॉकलेट ऑरेंज फ्लेवर्स में, एक और हो जाए। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। ओमेगा विस्टा झांक। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें या तशरीफ लाएं। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी दूध स्याह प्लासम लट्ठी लेके आना। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओं का पहला इंतखाब। A product by PMLN Pharma। सर पे चढ़ी है उम्मीदों की फसल खड़ी है, दाना दाना मोती बने। धान की फसल में तने की सुंडी का जदीद हल, तो 2 हफ्ते पे फर्टेरा लगाओ और धान का झाड़ बढ़ाओ। Fastest growing brand of the year award, Olivia Hair Color. Olivia, शुक्रिया। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, कैसे बेहतर क्या। गर्मी में आउटडोर सिटिंग रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. इस्तांबुल और झंग दोनों के हैं सूफियाना रंग। ओमेगा विस्टा का एजाज, दो हसीन सकाफतों का मिलाप। ओमेगा विस्टा झंग 200 फुट कुशादा सिग्नल फ्री मेन बुलेवार्ड, 100 कनाल पर मुहित गोल्फ कोर्स, ब्लू मॉस्क 3, 5, 8 और 10 मरला, साथ ही 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, जबकि 2 से 8 कनाल के फार्म हाउसेस। इसके अलावा 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग से मंजूर शुदा। माहाना किस्त सिर्फ 6,500 रुपए से। ओमेगा विस्टा झंग, जज्बा हो खिदमत का तो डिलीवरी 6,500 रुपए माहाना में भी हो सकती है। करके दिखाया लाहौर और फैसलाबाद में ओमेगा ने। सहूलतें इतनी कि गिनते चले जाएं, फवायद ऐसे कि सुनते चले जाएं। ओमेगा विस्टा झंग। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें या तशरीफ लाएं। पेशावर की कढ़ाई, लाहौर के चने, ओह कराची की निहारी। डोंट वरी मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है नया ब्राइट उतने दाग बताता है। मजे की कितनी है यार। स्विस प्रीमियम चॉकलेट चीज स्प्रेड, मिल्क स्ट्रॉबेरी ऑरेंज फ्लेवर्स में। एक और हो जाए। घी पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की महंगाई को रिलीफ साबित करने की कोशिश। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे, कहा IMF बजट से खुश है, खुश ना होते तो अब तक फोन आ चुका होता। तरक्याती मंसूबों पर 1,150 अरब की रिकॉर्ड रकम खर्च करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 9,200 अरब रुपए मुख्तस कर दिया। खाने पीने की अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का दावा भी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 869 अरब रुपए आवाम से निकलवाने का मिशन भी शुरू। साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोर धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। हजार से ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए क्योंकि इतनी महंगाई है। महंगाई, कारोबार तो सारा बंद है, हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। बजट तो बढ़ा देते हैं, महंगाई तो बढ़ा देते हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। बहुत मुश्किल होती है, पूरा महीना चलाना, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम इतना तो हो कि गुजारा हो जाए। सफ़ेद पोश लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक महीने से ज़्यादा 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन काम लगता है, 15-20 दिन बैठना पड़ता है और मकान के किराए भरे, घर के खर्चे करे, क्या करे। अब इस वक्त इतनी ज़्यादा फुल महंगाई हो चुकी है, मतलब हर एक
1 महीने बाद हम जब निकलते हैं एक चीज़ को लेने के लिए, जो चीज़ हम 10 रुपए की ले रहे होते थे वो 30 रुपए की चीज़ हो गई है। बजट में अवाम पर टैक्सेस का पहाड़, बैंक से 50,000 से जायद निकालने वाले नॉन फाइलर्स पर 8.6% टैक्स लगा दिया। मुर्गी का गोश्त और अंडे भी मजीद महंगे होंगे। पैकेट का दूध, दही और मक्खन भी महंगा होगा। 18% टैक्स लगा दिया गया। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान नए बजट में वजीर आजम और वुज़रा के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए भी 48 अरब रुपए रखे गए हैं। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब खर्च होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए रखे गए हैं। शमसाब सर, ये बताइएगा अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है? वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी? पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। क्या महंगा क्या सस्ता, किस किस पर टैक्स लगा, किसको रिलीफ मिला, महंगाई की असल वजह क्या, मुआशी माहिरीन के बेलाग तज्जिए, टैक्स एक्सपर्ट्स की 2 टोक राय, बजट अवाम पर कितना भारी होगा, बोल न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन। और आवाम को तो कुछ रिलीफ नहीं दिया। मजदूर तकबा बेचारा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? आदमी मर रहे हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए मिडिल तबके के लिए। ये लोग बजट बढ़ा रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है। हम मजदूर तबकों को तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वही महंगाई, वही दिहाड़ी जो है, तो कोई चीज सस्ती नहीं। आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, खा नहीं सकते, बच्चे नहीं पाल सकते। आवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा। यहाँ पे जो हर चीज़ जो है महंगी हो गई है, आवाम पर और कंपनियों पर इतने टैक्स लगाए गए हैं जो उसका असर जो है वो आम गरीब आदमी पर रहा है। अवाम दुश्मन बजट थी, इसमें कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इन्होंने नए टैक्सेस लगा दिए हैं जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इस बजट में कोई भी गरीब आवाम के लिए कोई भी पैकेज नहीं दिया है। बजट में मजीद महंगाई पर अवाम बिलबिला उठे, कहा रिलीफ की बजाय तकलीफ मिली है। हुकूमत ने गरीबों की जेबों पर नया डाका मारा है। बजट सरासर जुल्म और धोखा है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। बजट का मजमूई हजम 2100 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफा मुतवक्के। कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब से जायद रकम मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा का 4 माह का बजट तैयार। हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। तनख्वाहों और पेंशन्स में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट में 2 साल की तौसीह का इम्कान। रहनुमा PTI परवेज खटक का ट्वीट, दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं। मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। मीडिया में जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। चेयरमैन PTI ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। वो एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा चेयरमैन PTI को हुकूमत में आने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शाहराह कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका असल चेहरा सामने आएगा। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने कल यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि PTI के 5 बल्दियाती चेयरमैन गिरफ्तार हैं। रात की तारीकी में मजीद 2 चेयरमैन को लापता कर दिया गया। कल पुरम एहतजाज और शाहराह कायदीन पर तहफ्फुज़े कराची मार्च किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं कराची की खिदमत का मिशन जारी रखा जाएगा।
तूफान कराची के मजीद करीब आ गया। बीपॉर जॉय कराची से 850 किलोमीटर दूर, शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 14 जून की रात साहिल से टकरा सकता है। मकरान, ठट्ठा, सजावल और बदीन के इजला को भी खतरा। मजीद सूरत हाल अगले 36 घंटों में वाज़ेह होगी। सिंध के अस्पतालों में हाई अलर्ट। तैराकी और माहीगिरी पर पाबंदी। भारत की 3 रियासतों में भी अलर्ट जारी। खदीजा शाह की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आलिया हमजा की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से 12 जून को जवाब तलब कर लिया। यहाँ पेश आया, इसमें इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। ये मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। अपने लीडर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जो भी सियासी और जो भी क्राइसिस है, जो भी आपका सब कुछ है, वो आप अपने तक रखें। ये मुल्क हमारा है। शहदा की गमज़दा अहले खाना का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। अहले खाना का कहना है 9 मई का जो सानिहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिना हाउस में तोड़फोड़ के एक और मुलजिम की शनाख्त। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। कहा हंगामा आराइश पहले से तयशुदा थी। लाइट 15 घंटे जा रही है, पानी से दुश्वारी है, बच्चों के लिए बहुत ऐसी घूमते आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। 24 घंटे में से जो है ना 15 घंटे लगातार लाइट जा रही है। पूरा दिन लाइट नहीं होती, कारोबार हमारे इतने मुतासर हुए। गर्मी बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली गायब। मियांवाली, जहानिया, भक्कर और लैया में बिजली की तवील बंदिश से आवाम परेशान। कारोबार जिंदगी ठप हो गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्जामात का सामना। दस्तावेजात में एटमी प्रोग्राम और हमलों की मनसूबाबंदी की मालूमात मौजूद थीं। 100 साल कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशां फटने के दिल दहला देने वाले मनाजिर। तस्वीर में आतिशफशां आग के जंगल का मंजर पेश करने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में भारत पर 296 रन की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 123 रन बना लिए। भारत कैंगरूज की पहली इनिंग्स के 469 रन के जवाब में 296 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था। फिर खुदा जब नेमतें बांट रहे थे, किसी के लिए वर्ल्ड कप, किसी के लिए ऑस्कर्स, मेरे मुकद्दर में तुम्हें लिख दिया। क्या कर दिया? तुम अपना फ्यूचर क्या देखते हो? तुम्हारे साथ। और तलाक के बाद फिल्में एक साथ काम। शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ अवामी तबसरों की जद में। दोनों ने कहा हमारा माजी एक है। फिल्मों में काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। This headline news is brought to you by बिना रगड़े, बिना झंझट, मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, भांडे और पतीली मांगे, खूब घिसाई खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े, बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई।
Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में बात होगी डार के बड़े दावे। आवाम को कुछ नहीं मिला। बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। छोटी गाड़ी बड़ी कीमत। तूफान तबाही मचाएगा। आगाज में बजट की ही बात करेंगे। इस बार रिवायत से हटकर बजट पेश किया। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम रखी है। वजीर खजाना इशाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस माशी बहरान पर काबू पा लेने का दावा भी कर दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरे नज़दीक मुआशी इस्तेहकाम हो चुका है। अब हमने शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। हम फूड सिक्योरिटी मुल्क बन सकते हैं। ज़राई इनकलाब लाना चाहते हैं। सस्ते कर्ज की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने आटा, घी, चावल और दालों पर टारगेटेड सब्सिडी देने का भी ऐलान कर दिया। कहा पेट्रोलियम पर सब्सिडी कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही। ना हमें किसी ने ये सब्सिडी देनी है और ना हालात ऐसे हैं। PIE और पाकिस्तान स्टील बिल से मुताल्लिक निजकारी को देखा जा रहा है। करेगा जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये। ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है। अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है और जो 17 से 22 हैं उनको 30%। इलेक्शन के लिए फंड्स रख दिए हैं। इलेक्शन होने भी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इशाक डार का आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ गोलमोल जवाब। इत्तिहादी सरबराहान की बयानात से लाताल्लुक़ी का इजहार भी किया। साथ ही उनके बयानात के पीछे छुपने की कोशिश भी करते रहे। बोले प्लान B पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। इलेक्शन इल्तिवा का बयान देने वालों से बात की जा सकती है। अगर कोई इस तरह के हालात हुए तो आइन को देखा जाएगा। और वज़ीर ख़जाना इशाक डार कई मौक़े पर लाजवाब नजर आए। सख्त सवालात पर परेशानी नुमाया थी। कभी आएँ बाएँ की, कभी कन्नी कतराने की कोशिश करते रहे। कई बार नागवारी का इजहार भी किया। अलाउंस दहाइयों से चल रहा है। जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब वो स्पेस मिलती है उसको आप उसको मर्ज करते। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर? अलाउंस इज सेपरेट है जी। वही नहीं हो ही नहीं सकता ना। दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर आप कर तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह। वज़ीर ख़जाना इशाक डार ने दूध पर सेल्स टैक्स की तरदीद कर दी। बोले 9% टैक्सेस लगने की खबर देखकर हैरत हुई। मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। सिर्फ तजवीज़ थी कि डब्बे के दूध पर टैक्स लगाया जाए। क्लियर करना चाहता हूँ कि दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा। बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया। ए कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क।
बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा खुशी है हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसा कहां से आएगा? इशाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोर धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? अभी आपको खबर ये दें कि खानपुर में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बिजली बंदिश से कंप्यूटर रजिस्ट्रीज तहरीर करने वालों को सख्त परेशानी का सामना है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जाना नईम से जो आहता कचहरी में मौजूद है। बिल्कुल सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं और खानपुर में पारा तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो खानपुर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त आता कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरैज नबी साहबान और जो बुकला साहबान हैं वापटा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि लाइट बंद होने की वजह से जो तहरीर है, रजिस्टरों की तहरीर, वो कंप्यूटराइज होती है, तो इन्हें स्टाम्प निकलवाने में भी सख्त दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ अरैज नबी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे लोड शेडिंग के बारे में। जी, लोड शेडिंग ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। काफ़ी घंटों से लोड शेडिंग नहीं है। सब गवर्नमेंट का जो हमारे रजिस्ट्री हैं, स्टाम्प है, सब ऑनलाइन हो चुके हैं। कंप्यूटर हमारे बंद हैं, तो सैलान भी परेशान है, इनकी रजिस्ट्रियाँ स्टाम्प हैं। काफ़ी घंटों से बिजली नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये मसला हल किया जाए। हम 4 घंटे से यहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हुए हैं, तो बिजली ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि शहरी बता रहे थे कि लोड शेडिंग की वजह से जो हमारे काम हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और एक तो शदीद गर्मी है। तो शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खानपुर बहुत शुक्रिया आपका, खानपुर से अपडेट कर रहे थे आप। उधर भक्कर में भी गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है, जिससे ना शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बोलिए सलीम अख्तर से जानेंगे। जी सलीम। बिल्कुल, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह भक्कर में भी बिजली की लोड शेडिंग का जीन बेकाबू हो गया है। घर में ख़वातीन और बच्चों के अलावा कारोबारी हजरात भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं और लोड शेडिंग का गिला करते नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बानो बाज़ार भक्कर में ऐसी एक कारीगर के पास जो कि लोड शेडिंग से मुतासर हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कारोबार के दिन है, सीज़न के दिन है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। कस्टमर बैठे होते हैं, बहुत परेशान है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है। इस तरह काम नहीं होगा। काम हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में ताउन करे गवर्नमेंट इदारों से और बिजली के जो फराहमी है उसको यकीनी बनाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हमें ना तो रात को सुकून है, ना हम सही तरह सो सकते हैं और दिन को भी हमारा कारोबार बिजली के ना होने की वजह से शदीद मुतासर है। अब बकरा ईद का सीज़न है लेकिन हमारी मशीनें बिल्कुल बंद हैं और हम शदीद परेशान हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। जी, जहानिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अजीम सरवर से। गर्मी में शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जहानिया और उसके गिरदोनवा में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पर जो आम शहरी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि जो कारोबारी तबका है वो बिजली ना होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, दुकानदार से बात करते हैं। भाईजान बताइएगा आपका कारोबार कैसा चल रहा है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है भाईजान, 2 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे चली जाती है। कारोबार तबाह हो गए रह गए। बच्चों की रोजी रोटी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है इस वक्त। बिजली होगी तो काम करेंगे, पहले गाहक नहीं है, गाहक आते तो आगे बिजली नहीं है। हुक्मरानों से अपील है कि होश के ना खून लें और खुदा रहा हमें बिजली दें।
जी बिल्कुल, एक तरफ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ इस वक्त जो यूनिट हैं बिजली के उसमें भी बहुत ज़्यादा उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। अवाम नास की अपील है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अवाम के हाल पर रहम किया जाए और बिजली की जो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल खान से जानेंगे। जी बिलाल। मियांवाली की बात की जाए तो मियांवाली में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मियांवाली के शहरी और देही इलाका जात में 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जो कारोबारी शहरी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी शहरियों का कहना है कि जो उनके कारोबार हैं वो लोड शेडिंग की वजह से ठप हो चुके हैं और इनका ये भी कहना है कि रोज़ हुकूमत जो है बिजली की कीमतों में इजाफा करती जा रही है, लेकिन जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पर काबू नहीं पा रही। और दूसरी जानिब मियांवाली के मौसम की बात की जाए तो मियांवाली का मौसम शदीद गर्म हो चुका है। गर्म मौसम की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो घरेलू खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और मरीज हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो लोड शेडिंग शुरू की गई है। और अब सिंध के बजट की बात करें तो आइंदा माली साल के लिए सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज दोपहर पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा मुतवक्के है। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रखने की तजवीज़ है। किसका फायदा किसका घाटा, किसे मिलेगा रिलीफ, किसको होगा टाटा। सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। मजमूई सूबाई तरक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sir, I'll start my budget speech हिकिड़ो सिंधीअ में शेर पढ़णु चाहींदुसि। आहे असांजे इन ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस जो मेंबर साईं सरदार शाह, उन जो शेर आहे, उन खां शुरूआत कंदुसि अगर इजाज़त हुजे। वरी इश्क जी का इमारत अॾण लाइ ग़मनि खे मिटीअ में गॾींदा अचूं पिया, अंदर में नयूं के उम्मीदूं खणी नए सिर सिंध अॾींदा अचूं पिया। Mr. Speaker, sir, I feel humbled to begin with the name of Allah subhanahu wa ta'ala for his countless bounties upon me, my leadership and the Pakistan People's Party. That Allah chose me to serve the people of the second largest province of Pakistan, and it is heartening that we will complete consecutive third term in August of 2023. Sir, I also feel privileged on my ultimate standing before this August House to present the annual budget for this tenure. This budget is truly reflective of noble vision of leadership of Pakistan People's Party, its founder chairman, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, and President Asif Ali Zardari, of a prosperous and inclusive Sindh, wherein the fruits of development will reach all the regions and citizens, especially the underdeveloped areas, our youth, farmers, women, traders and senior citizens. Mr. Speaker, sir, I'd just like to lay the history of budget making in this August House. As you know, Sindh was separated from the Bombay Presidency in 1935. The first budget in this assembly was presented on the 3rd of August 1937 by Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, who was then the Chief Minister Sindh and also held the finance portfolio. Since then, after that, 58 budgets have been presented, and today I am presenting the 59th budget in the Provincial Assembly of Sindh. Sir, I feel honored and humbled that out of these 59 budgets, there have been several finance ministers, chief ministers who presented budgets. I have been associated with 14 of these 59 budgets, almost 25%.
Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. And sir, I'm truly, truly humbled for my leadership to have given me this honor. I'm truly humbled and thankful to Almighty Allah for giving me this opportunity. Sir, Sindh has recorded unprecedented development during the last 5 years despite natural disasters of COVID and floods, which imposed an additional burden of rupees 100 billion on the provincial economy and toppled the entire development portfolio. It compelled us to redirect our focus to post-flood restoration and slow down restoration and rehabilitation activities. Besides, massive global economic slowdown and scarce financial resources also forced the government to take unpopular decisions for economic and financial stabilization. Here I must acknowledge the support and assistance extended by the provincial cabinet of this House and this House for the effective and efficient implementation of austerity measures and public policies that facilitated the general public to brave such testing times of political, social and economic uncertainty. So, the next year's budget, our motto for the budget, the motto of the government of Sindh is revitalizing prosperity. We want to follow a path to economic recovery and resilience against climate change. The government is determined to create a path towards economic recovery while proactively addressing the urgent need to tackle climate change. So the key pillars for the budget 2023-24, and I'll go into more detail later, are economic stimulus recovery, climate change adaptation and mitigation, green and sustainable initiatives, social welfare and human development, infrastructure development, good governance and transparency. So before I talk about the budget, I'll talk a little about last year and the multiple crises that we faced in view of the rain and flood devastation last year. Despite having deep sentiments for COVID, rain and flood affected people who exhibited resilience, determination and strength in the face of life-threatening challenges, I am pleased to inform this August House that with the consistent implementation of flood response strategy, Sindh government has successfully combated the floods like we bravely fought the menace of COVID-19. मुझे इधर एक शेर पढ़ लेता हूँ. ये जब ये कोविड का और उसके बाद ये फ्लड्स का सारा हो रहा था उसकी मुनासिबत से है. जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं और हमारी कश्ती पार लगी. So Sindh carried the maximum burden in the country for both COVID and flood and faced disproportionate devastation in 2022 with 1,000 people dying and around 8,000 injured. Significantly affected the houses, transport, agriculture, irrigation and communication infrastructure. The post-flood assessment conducted by the district administration, the World Bank, the UNDP, the European Union and others showed that more than 4.4 million acres of agricultural land were destroyed and irrigation and flood protection systems were damaged. About 437,000 livestock worth $117 million were lost and nearly 60% of the road network was undermined. Moreover, a total of 2.36 million houses were destroyed, affecting 12.36 million people, including 650,272 partially damaged houses and 1.44 million fully damaged houses. In addition, 2,548 government buildings lost their shape, representing nearly 83% of the total nationwide figure. Sindh alone suffered a huge loss of $5.5 billion in the housing sector alone. However, the Sindh government's aggressive response to the natural calamity reduced the impact of the destruction.
The Sindh government immediately executed the emergency relief activities through the Provincial Disaster Management Authority in association with District Administration, Pakistan Army, Pakistan Navy, Pakistan Air Force and paramilitary forces for prompt evacuation of stagnant water. The aid and assistance received from local and foreign sources were distributed among the affected people. It includes supply of clean drinking water, 1 million tents were distributed, 630,000 plastic tarpaulins, 3.95 million mosquito nets, 2.55 million ration bags, 1.84 million blankets, sanitation kits, and a lot more essential items for daily living. During the flood and rain emergencies, 26 mobile hospitals were deployed in 16 districts to provide health facilities to the flood and rain affected people. More than 190,000 people were treated with free medicines, and more than 20,000 lab and other tests were conducted by the mobile hospitals only in 46 days of the emergency. To ensure effective operation and maintenance of these mobile hospitals, we have allocated rupees 556 million for the financial year 2023-24. UNHCR and UNFP also assisted with the supply of food items to the affected areas. In addition, we are grateful to the federal government who distributed through the Benazir Income Support Program. And Mr. Speaker, and all the colleagues here would remember that after the Shahadat of Mohtarma Benazir Bhutto, President Asif Ali Zardari initiated the Benazir Income Support Program. This has been a flagship program for all governments since then. And this flagship program which President Zardari started, this was the vehicle which enabled the federal government to provide assistance to the flood affectees in a swift and efficient manner. So I'm grateful to the federal government, I'm grateful to the Benazir Income Support Program for providing the necessary immediate cash relief to the flood victims in the province of Sindh as they did in the rest of Pakistan. So Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, even after Shahadat, is in everybody's hearts in the entire Pakistan, and it was due to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto that this money was available to the people. And as I said, President Asif Ali Zardari, who had initiated this program, he should be given all the credit for giving us such a vehicle which we can immediately use and provide flood assistance to people. So the government of Sindh, in addition to the immediate relief, we have negotiated, and I'll talk in more detail later on, about $1.7 billion from the World Bank for 5 projects, and we secured another $200 million from the Asian Development Bank. I'll talk in more detail about this later. So before I move to the budget numbers and the budget of 2023-24, I want to apprise the House about the global and national economic nosedive that we faced in the last few years. Sir, it is imperative for me to apprise the August House about the existential crisis the government is currently going through due to the dismal performance of the previous federal government, both in terms of geopolitics and geoeconomics. The subversive national economic policies, governance failure, excessive external borrowing, foreign policy fiasco, and monetary and fiscal policy debacle coupled with global economy meltdown due to enormous challenges like inflation, climate change, the war in Europe, and supply chain disruptions due to COVID and geopolitics caused severe economic problems, inflated commodity and utility prices, surging oil prices, and unfortunately rising consumer price index. ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं सर, एक और चीज मैं इधर बताना भूल गया. The key to progress is stability. By the grace of Almighty Allah, because of the leadership of the Pakistan People's Party, Sindh has remained stable for the last 5 years. आजकल लोग इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम तो इस्तेकाम खुद हैं जी, हमने आपको दिखाया है. आपको मैं स्टेबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूं? ये मेरा 5वां बजट है इस साल. एक ही फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरेशन में इन 5 सालों में 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स गए.
तो इस्तेकाम लाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी, सिंध में ला चुकी है, इंशाल्लाह ताला फेडरेशन में लाएगी। और इन पिछले खास तौर पे पहले 3.5 सालों के दौरान इन्होंने समझा कि जो अपनी सख्तियां करे, यू योरसेल्फ स्टिल अ विक्टिम ऑफ दोज, और जो तंग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ये रेत की दीवार की तरह कुछ पार्टी बिखर गई अभी, ये कुछ होगा। लेकिन मुझे यहाँ अगेन मैं आज हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ, उधर सारे दोस्त बैठे हैं, कि शेरो शायरी मेरा इट्स नॉट माई फोर्टे, आप सबको पता है। लेकिन अब ना रऊफ सिद्दीकी है, ना दूसरे फेडरल मिनिस्टर बन गए, अब इनमें दम नहीं है फैसल सलवारी है। तो मैंने आज इस्तिदा की है कि कुछ शेर और शायरी मैं भी कर लूँ, नहीं तो हमेशा मैं गलतियां कर जाता हूँ, आज भी शायद करूंगा, लेकिन हर वक्त सीखने का कभी काम खत्म नहीं होता। तो मैं फहीम जोगापुरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जो कि इस मुनासिबत से कि जिन्होंने कोशिश की थी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, हम और ज्यादा ऊंचा उड़े हैं इन 3.5 सालों में। उसके बाद और इसकी प्रूफ मिली है अभी जब इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध के सब डिस्ट्रिक्ट्स को स्वीप किया है। तो जितना दबाओगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी और ऊंचा उड़ेगी इंशाअल्लाह। Sir, it is unfortunate that the people in Sindh have to endure fallout of ever higher inflation at about 40%, with negligible anticipated growth rate for next financial year, while fuel and energy prices have also risen up to 50%. Mr. Speaker, a weak economy is always prone to setbacks in negotiation with IMF and development partners for its inability to fulfill compelling demands for signing hardened terms only for the sake of strengthening foreign exchange reserves, as Pakistan has been facing since natural disasters entrapped the nation. However, despite being entangled by multiple crises, Sindh proved to be a responsible federating unit and consented to fiscal management to maintain a cash surplus of rupees 184 billion for the current financial year 2022-23, according to the federal government's commitment with the IMF to secure the required bailout package. Notwithstanding all this, the Pakistan People's Party's dauntless and unwavering resolve to face crisis converted threats into opportunities. We revised the entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision-making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve, and inshallah we will achieve." May Almighty Allah bestow us with the courage and capacity to serve the people of Sindh on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Qaid-e-Jamhuriyat Shahid Mohtarma Benazir Bhutto. They strove relentlessly to achieve these goals. Now, under the dynamic leadership of PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, the Pakistan People's Parties and its government continue to work to make Sindh a perfect model of a true welfare state. I'll also like to thank, though the Muttahida Qawmi movement is not in coalition with us here in the provincial government, but the Muttahida Qawmi movement is in coalition with us at the federal level. So I'd like to thank the Muttahida Qawmi movement, its leader Khalid Maqbool Siddiqui, Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif, and other political parties who have worked with us during these difficult times. Mr. Speaker, now I'd like to present before the House the revised estimates of 2022-23. Revised estimates for provincial expenditures have been proposed to be 1.76 trillion for the year
2024 as against the budget estimates of 1.713 trillion in financial year 2022-23. It includes current revenue, capital and development expenditure. Revised estimates for 2023 for current revenue expenditure have been pitched at rupees 1.297 trillion, representing 8% increase against budget estimates of 1.199 trillion. The increase is mainly due to additional expenditure incurred on raid and flood relief and rehabilitation activities. Revised estimates for the year 2022-23 for current capital expenditure have been proposed at rupees 62.13 billion, showing 8% increase over budget estimates of rupees 54.481 billion for the year 2022-23. The increase is due to worsening rupee-dollar parity from Pak rupee 186 to almost Pak rupees 300, raising the expenditure by rupees 7.6 billion towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 21.5 billion as compared to budget estimates of rupees 23.6 billion. So the revised development expenditure for 2022-23 stands at rupees 406.32 billion. This is the highest ever development expenditure that inshallah we are going to achieve this year. Prior to this, it was 2017-18 that we achieved the highest. Then I told you, कोई आ गया और 3-3.5 साल हमारे ऐसे गए, 1 साल में रिकवर करने में लगा. इस साल we are back on our feet despite floods. Despite so many other challenges, we've had the highest ever development expenditure. And I'll talk about next year also. So the overall receipts, the federal transfers have increased from the federal transfers that we hope to get from the federal government by the end of the year are 1.08 trillion rupees against a budget of 1.055 trillion. Revised estimates for divisible pool component stands at 982.54 billion against budget estimate of 958.62, and for straight transfers at rupees 71.15 billion against budget of 70.82 billion. As I said, we expect to receive this budgeted amount by the end of the current financial year. As far as own resource revenues are concerned, we are going to pitch the revised estimates at rupees 358.29 billion against a budget estimate of 374.5 billion. Mr. Speaker, I'm glad to tell you that yet once again, the Sindh Revenue Board, inshallah, will meet its target of rupees 180 billion by the end of this year, and I'll tell you about our targets for next year. Non-tax revenues have been, the revised estimates for non-tax revenues have been proposed at 23.29 billion. The revised estimates for foreign project assistance have been proposed at rupees 147.82 billion, while federal PSTP has been estimated at rupees 14 billion. The budgetary support grant relating to education sector stands at 9.04 billion in the current financial year. Sir, before I go to the numbers for the next year and give you some details of next year's budget, I want to present to the August House a vision for our vision for financial year 2023-24, a vision for an empowered and inclusive Sindh. Pakistan People's Party is a democratic and progressive party. It believes in ideology of inclusive governance. It envisions a progressive Sindh where institutions, policies and services are accessible, accountable and responsive to all members of the society. True reflection of this philosophy can be observed in budget estimates of 2023-24. Mr. Speaker, in order to get to a budget which is acceptable not only by this House but by the people of this province, a pre-budget assembly session was held under Rule 143 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. Let me remind all of you here that we are the only House, the only assembly who has rules for a pre-budget session. The other 3 provinces or the National Assembly does not have any such rule. So, sir, this pre-budget session was held during the months of January to March for general discussion on the upcoming budget and getting well-considered suggestions of the honourable members of this House.
It helps in setting budget priorities according to ground realities and actual demand and needs of people. The invaluable feedback and suggestions have been duly incorporated while finalizing budget estimates of 2023-24. Mr. Speaker, the Government of Sindh developed a tool for citizens' budget in the fiscal year 2021-22. It provides statistical analysis of findings of a survey conducted to gather feedback from the intelligentsia, serving officers, scholars and academicians, and the general public. It has transformed the conventional budgeting process into participatory decision-making, whereby public opinion on prioritization of public expenditure and improving ways and means for revenue generation have been well considered in finalizing budget estimates of 2023-24. We have conducted awareness sessions this year in reputable institutions like Sakhar IBA Karachi, Applied Economics Research Center Karachi, and the Commissioner's Office Hyderabad to inform people about the significance of the activity and its effectiveness in developing a solution based on the insights, opinions, and suggestions shared by intellectuals. Intellectuals, scholars, researchers, stakeholders, and citizens. A total of 356 persons, including 240 males and 107 females, participated to provide feedback through questionnaire. The feedback and invaluable suggestions have been transformed into budget estimates for the year 2023-24. The findings of the survey and its analysis are published every year along with the annual budget of the province, and you'll find that in your books. Sir, now I present to the House the budget estimates for the next year. Budget outlay for provincial expenditures for the financial year 2023-24 is rupees 2.237 trillion. This marks a 35% increase over budget estimates of 1.713 trillion in the current financial year 2023-24. I would like to briefly present the components of current revenue, capital and development expenditure. Budget estimates 2023-24 for current revenue expenditure have been pitched at rupees 1,411 billion, being 17.65% higher than budget estimates of 1.199 trillion for the year 2022-23. So the increase is mainly due to massive recruitment of the government, especially in the education sector, and I'll talk more about that, causing the employee-related expenses to take a sharp leap. I just want to mention the few areas where we have put in the most budget as far as the current revenue expenditure is concerned. The highest budget has been allocated to school education of about 267.5 billion, followed by health, almost 228 billion rupees, followed by law and order in the home department, 143 billion rupees, and local government, which is 112 billion rupees. The current capital expenditure has been proposed to be rupees 136.256 billion, with an increase of 150% over budget estimates of 55.481 billion for the year 22-23. This increase may be linked with excessive repayments of interest amount due to hike in foreign exchange rate, as I mentioned earlier, raising the expenditure disproportionately. The budget estimates for investment activities have been proposed at rupees 88 billion, including inter alia rupees 26 billion earmarked for Sindh Pension Fund and rupees 58 billion reserved for bridge financing of various public-private partnership-led development projects through Viability Gap Fund, depicting an increase of twice more than budget estimates of rupees 23.6 billion for year 2022-23. The budget estimates for year 2023-24 for provincial development stands at an unprecedented and a record rupees 701 billion against a budget estimate of 459 billion in this current financial year. So inshallah ta'ala, we hope to spend more than 700 billion rupees in development funds in the next financial year. I'll talk more in detail about this. In terms of federal transfers, as you are aware,
Most of our income depends on transfers from the federal government because they have the major tax collecting authority. We hope that the budget estimate of federal transfers, which have been set at 1.353 trillion for the financial year 2023-24, including 1.255 trillion for divisible pool component and 64 billion for straight transfer and rupees 33.74 for OZT grants. This estimate shows an increase of 27% over the estimate of 1.055 trillion in the current financial year. The provincial receipts, we've done some fiscal reforms we've implemented to mobilize provincial revenues to curtail budget deficit. The augmented collection is expected in the next financial year. Therefore, we have proposed budget estimate of rupees 469.9 billion for tax revenues for the financial year 2023-24. We have set quite ambitious targets for next year for major revenue streams. Next year's collection target for Sindh sales tax on service has been pitched at rupees 235 billion. It is a difficult target, but I am sure that Sindh Revenue Board will be able to achieve this target. Likewise, the revenue collection for levies under excise and taxation are pitched at 143 billion and under Board of Revenue at rupees 55 billion. We estimate a non-tax revenue of rupees 32 billion for the next financial year. Other receipts that we hope to get for our budget assistance in the next year 2023-24 include a foreign project assistance of rupees 26.69 billion. This is unprecedented. This is more than double of what we've ever pitched before. And I'll talk about it later when I talk about our World Bank funding projects. The funds have come from, as I said, the World Bank, the Asian Development Bank, the USAID and JICA. Budget estimates for projects offered under federal PSDP stand at rupees 21.9 billion and for budgetary support at rupees 5.92 billion. Here I would like to mention that the federal government about a week ago had only allocated 6.6 billion rupees for federally funded projects to be executed by the government of Sindh. This was the 2nd of June when the annual plan coordination committee met. We strongly objected to the small allocation to the Sindh government for this, and as a result this has been increased almost by 4 times, and now we are promised 21.9 billion rupees for provincially executed projects in the federal PSDP. So from 6 billion we've jumped to almost 22 billion in the last 1 week or so when we objected to this, and I'm grateful to the federal government to have partly accepted our proposals. I'm not happy with this. I am grateful to my party leadership who emphasized upon the federal government that they have to treat Sindh at par with other provinces. Unfortunately, that has not been the case in the last 4 years, and in this last year also we have a lot of reservations, but I'll not talk about this here today. There will be other avenues, there will be other forums where I will raise my voice. So before going into details of the development expenditures for next year, because I'm sure everybody is interested in that, I'd like to talk about the flood devastation. I've briefly spoken about this, but I'd like to talk about this in a little more detail before we go to the actual development expenditures. I'll talk about the catastrophic floods of 2022 and the Sindh government's response. So these floods were described by none other than the Secretary General of the United Nations as a monsoon on steroids. The climate catastrophe affected over 33 million people in the country. Under the unprecedented rainfall in July and August of 2022, Sindh was the most affected province, with 70% of the land submerged and over 12.4 million people affected. The devastation caused havoc on almost all facets of life in the province. It damaged more than 2 million houses, standing crops on almost 4 million acres, about 20,000 schools were damaged, and there were damages in several other sectors. 24 out of the 30 districts of Sindh were declared calamity hit. And when this flood came,
and I'll talk very, very candidly. After visiting the flood areas, where I, for one, saw water everywhere, water which had no place to recede, I sort of lost hope. And I'm grateful to my cabinet colleagues and members of the Provincial Assembly, other political parties who went to the affected flood people, held their hands, and helped them in all possible ways. और उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद आया. मैंने कहा ना, I literally lost hope. और ऐसी कुछ थी बात के ये शेर मुझे याद आया कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. और उस शाम के बाद सुबह आई. बहुत मेहरबानी. Really grateful. Sir, in addition to providing immediate relief, which I talked about earlier, the government of Sindh, along with its partners, also focused on mobilizing resources